use of drugs and alcohols मद फद पीवे बुझिपारे और होचे RH ब्लड फैक्टर आ ऊपर पड़े research finding that very clearly establish the role of RH blood factor in producing developmental irregularities. As example, in genetically determined incompatibility between the blood type of fetus and mother. When the mother blood type is RH negative and fetus is RH positive, serious consequences happen. Okay, the RH blood factor ta eta both माने significant role play करियो. जदि मार RH पॉजिटिव थिबो छुआर नेगेटिव थिबो किबा पॉजिटिव नेगेटिव रहिबो ताहाले सेटा सीरियस इफेक्ट पकेइबो. This RH positive fetus produces the certain antigen which pass through the mother blood stream through the placenta. These are then passed to the fetus as a result of which the red blood cells of the fetus are destroyed. तो जते बेले जो fetus जोडा थिबो बा भ्रूण थिबो ता भितर गोटे प्लासेंटा रहइबो. प्लासेंटा गोटे पर्दा रहउची से पर्दा थ्रू रे ब्लड वेसल ता बा ब्लड ता ट्रांसमिट होबो कार मा आ छुआर. जति माने छुआर थिबा RH पॉजिटिव ताले ता भितर गोटे हार्मोन क्रिएट होबो आ जोटा के मा सेल को भीतर को गले तेरे कह होबो ना ऑटोमेटिक से छुआर जो ब्लड वेसल ता सेटा नष्ट होई अगेन छुआटी मरि जियो. Okay. This may lead not only to miscarriage, stillbirth, but also it can lead the death of the unborn baby. Okay, so এই जो RH blood factor incompatibility रहिले ताले कौन होबो ना जेतेबे बेबी टा डेवलप होबो तापर मरि जीवो नहले कौन होबो ना miscarriage हे जाय. As per report, such cases occur in about out of 220 pregnancy. Okay, तो 220 रु गोटिए मां को एवलिया रोग हेताय RH ब्लड फैक्टर इनकम्पिटेंसी रहिताय. जाते के कोन हुए ना छुआर RH पॉजिटिव थिबो मार RH नेगेटिव रहिबो. तो RH पॉजिटिव रो जो ब्लड रहिबो सेठु गोटे एंटीजन क्रिएट होबो से एंटीजन जाय कि मार ब्लड वेसल ले मिसिबो. जेतरा मां ब्लड वेसल ले मिसुची तो ऑटोमेटिक छुआर जो ब्लड वेसल ता जोटा रहितिबो से डैमेज बुझले कि. So as observed, usually the first born baby is not affected as developmental of antibody takes time, but the second and third born infant are more likely to be victim of this kind of problem. जत्ते बरे प्रथम छुआटी जन्म हुए मां पाखरो ए प्रकार प्रॉब्लम पाखा पाखी आसी न किंतु द्वितीय तृतीय ए सब छुआ हुए सेकंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड जेबे आसे ए प्रकार प्रॉब्लम टा आसी जाय. तो डॉक्टर सेते बहुत केयरिंग नियम से समय. If due to any miracle the baby survives the effect of incompatibility, he may develop mental retardation and partial paralysis subsequently. जदि छुआटे नॉर्मल आसे समय तारा पॉजिटिव रहला और नेगेटिव रहला ठीक अछि छुआटे बंची गला किंतु ता पर इफेक्ट कोन आसीबो तारा मेंटल डेवलपमेंट हेइ नथे. तो हमें जतले छुआटे के कहि दउ जते बेले जो जो स्टेज देखि जाय जो एज देखि जाय पिलार जत्ते के माइंड डेवलप होबा कथा से टाइप रो माइंड डेवलप हुए नहीं बड़ा हेले भी से छुआलिया बड़ी प्रकृति करते है बुझी पार नथे. नहले कोन हुए ना गोटे साइड पैरालिसिस सब चली परिबो नहीं एबा हाथ गोटे चलीबो नहीं गोड़ गोटे चलीबो. तो एई टाइप रो सब प्रॉब्लम सब आसीते. However, at present new technology are devised to control the effect of RH blood factor. Hence what is the most important in context is to be aware of the dangerous consequences of the factor, then take the preventive measure to overcome it. तो एबे RH factor टा बेसिकली होने बेसिकली न होवार कारण भी होची कारण आजिकली जो पेरेंट्स माने रहउछन से माने सिंगल चाइल्ड रे लिमिटेड रहउछन आउ किंतु जदी एवळे जिंस आसे एबे ता पय नुवा टेक्नोलॉजी भी सब आसिलानी किंतु से रोगटा को प्रथम रो डिटेक्ट करिया दरकार. जदी एवळे किछि कन्सिक्वेंस रहउची ताको प्रॉपर केयर नै कि ताकर सर केयर नेले छोटे पहुंची दियो. Irregular secretion. Next problem कौन आसे? Irregular secretion of endocrine gland. It has been noticed that irregular secretion from the endocrine gland create major problem in the unborn baby. It not only disturb the
cognitive function but also increases the possibility of centism and microphallia in the fetus. It is also the texture of the skin, proper development of the bone. In very rare cases, it may also lead the monogolism in the fetus. अच्छा आधे गोटे गोटे वर्ड अछि तो मु कहूची एंडोक्राइन ग्लैंड माने जानछो बॉन्ड करी अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंड होची माने एटा होची कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ग्लैंड रहिबो जेमति कि हमें कोइ परिवा थायराइड ग्लैंड एटा होची पिट्यूटरी माइंड रे जोटा रहची एठी जदी सिक्रेशन जदी हमर जो ग्लैंड रो हार्मोन सिक्रेशन जदी रहिला इरेगुलर जदी आसिला ठीक समय न होला तला ऑटोमेटिक कोन आसीबो ना फेटस ऊपर तार प्रभाव पड़िबो. It also affect the texture of the skin and proper development of the bone. माने pituitary gland जो हार्मोन ग्लैंड सब रही छि ता तो जदी हमर न आसिला पैंक्रियास जेंत रहउछि खाद्य हजम करिया पे गोटे लिक्विड टाइम कोन गैस हो जाए तो गैस काई हमको जो समय खाइबा को पड़ी थाए हम से समय न खाइले ऑटोमेटिक से समय का होय ना हमर स्टमक भीतर गोटे लिक्विड फॉर्मेशन हो आ से लिक्विड ता हमर गैस्ट्रिक तो से लिक्विड ता कोन चाहे ना जो समय सिक्रेशन हो से समय हमको खाइबा नियत दरकार पड़ी
आमे खाइले सेटा को हजम करे आ जदि हम खाली पेट रहिबा तो ऑटोमेटिक से कोन गैस्ट्रिक आरु कि से समय जदि हम तेल जिंस कोन भी जदि बेसी खाइ दबा सी कोन आसे सी भी गोटे कोन रहउची गोटे लिक्विड टाइप रा आइटम रहउची बा लिक्विड बा तेल रहउची तो ये भी तेल मिश्रण से सी भी गैस्ट्रिक करे तो सेति पई कोन करा जाय ना आकु सब कंट्रोल करबा पई हमको प्रॉपर टाइम रे खाइबा पड़िबो आ जदि मां से समय प्रॉपर टाइम रे न खाइला छुआर कोन हबो ना प्रथम जो स्किन डेवलपमेंट हबनी बोन डेवलपमेंट हबनी नॉर्मली हम एमती जाउचे हाथ बाज जाउचे किछि होनी छुआटे जदि हाथ बाजियो हाथ हाड़ होई बुझला माने टिके जदि बाडे दबो त हाड़ होई हाड़ जॉइंट हबनी केते खण हाड़ थाए छुआर छोट छुआर हां केते मनुष्य केते थाए हां 206 छोट छुआर केते थाए हाड़ भांगी तुम देखिए छुआर नो तम हाड़ को भांगी देखिरा 256 खंड हाड़ से छोट छुआ तो सेटा जॉइंट हे का 206 खंड आसी तो वो भांगी की जाए हां तो छोट छुआ तम केतरे जो नाच सिखदे से जो हाथ गोड़ एमती पूरा बके टके एकर केमती होय तो जॉइंट हे नते आस्ते 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 से हाड़ गुड़ा सब जॉइंट हाँ दौड़ते बेसी टाइम से माने फ्लेक्सिबल था बुझियो तापर रहला देखो इट आल्सो मे लीड मोनोगोलिज्म ओके तो मोनोगोलिज्म माने कोन देखो व्हाट इज मोनोगोलिज्म MONGO LISM मोनोगोलिज्म होची गोटे डिजीज ओके देखो it is a disease where it causes extra copy of the chromosome रा extra copy से बने हमर क्रोमोसोम रा केतरा कॉपी हवा कथा एक्चुअली केतरा कॉपी हो 23 रा केतरा कॉपी हो 23 कॉपी हो 23 हो हां दीटा 23 हो किंतु ये कोन करियो एक्स्ट्रा आ गोटे करियो तीनटा कॉपी करियो तो तीनटा जो कॉपी करियो तो सेटा कुआ जाय हां मोनोगोलिज्म इन फेटस माने एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द फेटस कुआ जाय तापर रहला एक्स-रे irradiation frequent use of x-ray irradiation during the initial month of pregnancy may lead to serious abnormality in the unborn baby more specifically the exposure of the pelvis area is very harmful the resulting of consequence of this may produce the microcephaly and teeny headedness leading to cognitive impairment. The entire world have already observed the ill effect of the dropping of atom bombs in Hiroshima and Japan for so many years. Hence, yearly exposure to X-ray irradiation should be restricted to prevent various forms of mental retardation. माने X-ray irradiation कौन है? इतना जो आणविक एरिया रे विकिरण जो कहते माने जो समय बालेश्वर कहवा
जो सब एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो सब जगह रे अछि ए समय रे सेही सब जगह माने करे एक्सरे रेडिएशन टा बेसी हुए आ द्वारा कोन हेबो जो रे गुडा को पासेस हुए से रे जदी पड़िबो ताले कोन होबो छोटो छुआर जो मुंडटा छोटो होई के आसीबो जति डेवलप होबा कथा से डेवलप होबनी हां मुंडटा माने बॉडी तुलन मुंड छोटो होई हां ओके आ कोन आसीबो ना से एडा कोन पाई हुए ना मार जो जगह रे छुआटी रहे से प्रॉपर स्पेस पाइनी से जगह रे रहिया पाए तार प्रॉपर प्लेसमेंट ता हुए बॉडी जति की जगह हुए मुंडर डेवलपमेंट पे सेति प्लेस रहइबो तो ऑटोमेटिक बॉडी तुलना मुंड छोटो होई जीवो आ ता सहित कोन आसीबो ना जेमति कि विकलांग छुआ सब जन्म होय बुझला कि नहीं बेले देखिना गोटे गोटे जगह अपपुष्टि रोग हेले आइदर मुंड बड़ हेतिबो बॉडी छोटो थिबो नले मुंड छोटो थिबो बॉडी बड़ थिबो तो सेही सब इफेक्ट गुडा को एक्सरे रेडिएशन बोली कहै बुझला कि नहीं maternal attitude towards the pregnancy the factor is very important from the psychological perspective the attitude of the mother the attitude of the mother towards her pregnancy is very important from the point of viewing determining the most of the stress that she is going to experience throughout the prenatal period. It has been confirmed by research study that continuous exposure to stress or heightened general emotionally over quite a long period of time affect the adequate growth and development of unborn baby. माने मारो अत्यधिक affection अत्यधिक सतर्कता किंबा बिना सतर्कता ए दीटा जति रहिला ताले ऑटोमेटिक एटा कोन करिवो ना छुआर मेंटल जो मेंटल एटीट्यूड जति न रहिवो ता छुआ ऊपर भी सेटा प्रभाव पड़िवो it will affect the development of the infant in the post prenatal period due to the glandular imbalance and also create serious developmental irregularity छुआर जति के डेवलपमेंट ए माने हाथ गोड़ ब्रेन ए सब डेवलपमेंट हवा कथा से सब डेवलपमेंट हवा गोटे होची अति सतर्कता आ गोटे होची बिना सतर्कता तो ए दीटा जिंस रहिला हो बुझि अछि सेति पे से समय कोन कोन हां सतर्क रहिबो अति सतर्कता कोन एक्सरसाइज करिवा नै ओके तो से ए जो जिंस टोटली काम करिवा नै तो ए सब जगह रे कोन हुए ना ऑटोमेटिक छुआर जति डेवलपमेंट हवा कथा next problem कोन आसे uterine crowding under the normal circumstance the uterus is sufficient to carry a single fetus problem arises when more than one fetus share the same space uterine crowding केते बडे हुए आ जता जाणा छुआ जन्म हो तो गोटे यूटेरस केवल गोटे छुआ को जन्म दे पारि किंतु जता बडे तीटा छुआ रहिबे तो से समय रे तांको बढ़िया पई सेतिकी स्पेस मिलिबो नै problem arises when more than one fetus share the same space there is possibility that while one of them may get the advantageous position within the uterus of another male माने गोटे दीटा जतरा जाना छुआ आसे गोटे छुआटे कोन करबो पूरा कंफर्टेबल जगह नै जियो आ गोटे छुआटे कोन आसीबो सी आ पोजीशन पाइबो नै डेवलपमेंट होबा तो जे कंफर्टेबल पोजीशन नइला इ सबटर बुद्धिया होबो आ जे कंफर्टेबल पोजीशन पाइला नै डेवलपमेंट हवा पाई सी एते बुद्धिया हो तो जने गोटे हायर रे जने लोअर रे किंतु जहा अच्छा जतरा जन्म हो रिसर्च ऑन twin studies and on multiple births clearly reveal that prenatal crowding is not only RH development while the fetus is there in the uterus it is also significantly affect the postnatal life केवल prenatal life माने जन्म होवा समय रे बा छुआटे जतरा पेट रे बढ़ुथिबो से समय रे केवल अफेक्ट करनी postnatal period माने छुआटी जन्म ही साइला परे मध्य एई जिंसटा अफेक्ट हुए so these problems are not only related to the comparing their IQs but also academic social and emotional adjustment एटा कोन कोन हुए पिला एकेडमिक गोटे पिलाटी एकेडमिक वाइज पाठ पढा रे बहुत तीक्ष्ण थिबो आ गोटे डाउन थिबो गोटे सोशियली समस्त सहित भलो व्यवहार करथिबो आ गोटे साइड नेचर थिबो नले उग्र थिबो ओके इमोशनल एडजस्टमेंट करि परिबो नाही तो एई सब प्रॉब्लम देखा जाय
नेक्स्ट और लास्ट पार्ट टा होची नेचर एंड वर्क प्रोफेशन ऑफ ए मदर मदर जेता प्रेगनेंसी होची से एक्चुअली जेते माने कर्मजीवी महिला रहउची से को जगह रे काम करूची recent research study have pointed out that nature of the work the expected mother is associated with also another contributing factor in producing developmental irregularity को जगह रे इरेगुलरिटी हुए को सेक्टर रे जदि महिला काम करूची से समय इरेगुलरिटी हुए ना वुमेन वर्किंग इन फैक्ट्री बड़ बड़ कल कारखाना रे जते काम करूची से समय रे कोन हुए ना ए इरेगुलरिटी हबो आ गोटे कोन हबो जदि हॉस्पिटल रे काम करूची केमिकल लैबोरेटरी रे काम करूची ब्यूटी पार्लर रे काम करूची जदा कि केमिकल सहित जते बेसी काम करूची से जगह रे छुआ ऊपर इफेक्ट पड़े and more prone to such difficulty and they directly add to increasing number of birth defect as well as miscarriage. It has also been considered as a burning medical problem. माने एटा एबे काना सबटार बड़ मेडिकल प्रॉब्लम होची जो महिला माने इंडस्ट्री रे काम करूछथि आ प्राय तो महिला माने देखिथिबो ब्यूटी पार्लर करे कि रहि जंती तो से जगह भी प्रॉब्लम ता रहे A healthy prenatal development will contribute to a healthy postnatal development. जते prenatal development ता जते healthy रहिबो postnatal ले बा पिला जन्म हला परे से सेते healthy रहिबो एबे आसीबा next period होची infancy from birth to 2 weeks बा शिशुर मृत्यु हार 2 सप्ताह रे बहुत अधिक थाए कारण छुआटे जते बेले नवजात शिशुर जन्म हुए से समय से एनवायरनमेंट सहित बा परिवेश सहित से समय एक्वेंटेड हेई पारे ना तार टेम्परेचर हमर बाहर मार पेटर जो टेम्परेचर थिबो बाहर को आसला और टेम्परेचर परिवेश सहित रही थाए ता सहित त खाद्य से मां जहा खाउतिला से खाद्य ऊपर निर्भर करतला इनडायरेक्टली से निर्भर करतला एबे से डायरेक्ट फूडिंग खाइ तो पिला जेता छोटो थाए से केवल लिक्विड खाद्य ऊपर निर्भर करे हमें लैक्टोजिन दो कि मार खीर पी तो से समय तार हजम शक्तिटा भी बाहर खाद्य खाइ कि ता हजम शक्तिटा भी बढ़ी न थाए तार सेति कि डेवलपमेंट तार हेई न थाए डाइजेस्टिव सिस्टम रे तेनो डिफरेंट प्रॉब्लम ए 15 दिन ने से फेस करे तो ए 15 दिन ताको क्रुशियल समय बोली ताको निया जाए 15 दिन परे जो एटमॉस्फेयर सहित एक्वेंटेड हे जाए तापर कोन 21 से तार नामकरण करा जाए बुझियो कि नै The period starts immediately after the infant tastes the light, sound, air, and atmosphere of the external environment. The infancy period केतेबेले start हुए ना जेतेबेले छुआटी जन्म हबो से लाइट देखिबो साउंड सुनिबो आउ हमर बाहर परिवेश सहित acquainted रहिबो with understanding its nature and meaning. The period of infancy is also known as period of newborn. Infancy को newborn period मध्ये कहल जाय. The duration of this period is only 2 weeks. This is the shortest of all development period. माने जो infancy period टा सबटारो shortest duration थाए कारण आर duration only 2 weeks केवल 2 week पर्यंत रहितिबो. The infant usually respond to the postnatal environment with very painful cry. जेतबेले पिला जन्म हुए संगे संगे से कोन करे कांदे यदि न कांदे हम कोन नॉर्मल बीपी हेरि ओके ताको चिमुडी दियस Okay, the response will happen. Say, Jani Parchigine. Infancy is considered to be a plateau in the development, which means the period of halt and or no development. तो से जो 15 दिन थाए 15 दिन भीतर पिलार कोनोसी डेवलपमेंट हुए नहीं से केवल एडजस्टमेंट करे एनवायरनमेंट सहित डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बिलीव that the most probable the infant mark a bigger difference in temperature. First it changes from 100 degree Fahrenheit in the uterine sac to the postnatal temperature ranging vary 60 degree to 70 degree Fahrenheit. जेतबेले मार पेटरे थिबो तार टेम्परेचर छुआर टेम्परेचर थिबो 100 डिग्री Fahrenheit. ओके तापरे जेतबेले बाहर को आसीबो सेतार थिबो 60 रो 70 डिग्री Fahrenheit टेम्परेचर को से अनुभव करिबो. Secondly को आसीबो with regard to the breathing as the umbilical cord is not there. वे जो नाही कटा हेते छुआर तो सेठी से निश्वास प्रश्वास ता भीतर निये खाद्य ग्रहण करे ता भीतर ब्लड वेसल जाए से नाहीटा कटा हेतिबो तो नाहीटा कटा हेतिबो बाहर एटमॉस्फेयर रो ऑक्सीजन से निजे न हो जेता निजे नबो से ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी ता पाखरे आसी जाए
Second, with regard to the breathing, as umbilical cord is not there, and he has to breathe on its own. Hardly to take the nourishment from the mother through the sucking and swallowing. The fourthly, the activation and elevation system for bowel and bladder function. Okay, the better bladder function. Okay, तो ये सब जिनस तार काम करूची कि नहीं सेटा देखिबो केतेटा कि से भितरे होतला एबे जतरा बाहर आसीबो तार हजम क्रिया ओके एक्सक्रीटेशन ये सब जिनस गुडा को तार बाहर से जतरा करिवो तो से समय ताको माने से जो सिस्टम गुडा जदी काम न कला तार तापे प्रॉब्लम hence this plateau or period of growth and development is due to the necessity to make the immediate adjustment to the postnatal development. तो जब छोटे जन्म हुए immediately से कौन करे ये सब प्रॉब्लम ना सम्मुखीन हुए. Adjustment is usually difficult to all the infant. As observed, some infant may experience difficulty in making adjustment to the external temperatures. किछि किछि पिला माने कोन करते एक्सटर्नल टेंपरेचर को एडजस्ट करि पारंते नै. While some other may experience difficulty in breathing and may need oxygen to overcome. ताको संगे संगे को होय गोटे छुआ जन्म होला पर आईसीयू भीतर रखा जाय शिशु भवन रे एडमिट हिता ताउडे काच भीतर रखा जाय एक्स्ट्रा केयर दे हां लाइट दे ताको टेंपरेचर दे दे तापर काच भीतर रखा जाय. लाइट काई दिया जाय को मां पेट भीतर केते थिबो 100 डिग्री फारेनहाइट बाहर को आसीबो 30 डिग्री कमिबो 30 डिग्री जतरे कमिबो तला एडजस्टमेंट न हुए ताको बॉल देके गरम करके रखा जाय. तापर सीधे आस्ते 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 एडजस्टमेंट कला परे बॉलटा काट देबो. All the infant need to make the major adjustment, especially in relation to these four areas. In this context, developmental psychologists have identified 6 major factors that are most important in helping the infant. Gote hela prenatal environment. Gote environment upare rahibo. Type of birth: natural, breech, transverse, instrumental, or cesarean birth. The natural birth what is breech, transverse, instrumental, and cesarean. Okay, जो कहते हैं surrogacy mothers ये सब जानते instrumental जोटा है test tube baby तो ये सब डिपेंड करे पिला केमती एनवायरनमेंट से तो acquainted हो तो समस्त का डेवलपमेंट अलग अलग है कि होता है. The experience associated with the birth. Only. What is the experience associated with the birth? The length of gestation period. Gestation period को क्या को कहा जाए? इटे ଗୋଟେ word ଅଛି gestation period. Gestation period आको कहा जीवो from conception to till birth. इटा कहते हैं gestation period. तो word में पाइबो gestation period. इटा कोड था from conception to birth. Okay. हुआ मां पेटरे रही पर्यंत जो पीरियड ता देले ताको कहा जाए gestation period बोली कहा जाए. तापर कोन थाए कोन आ गोटे फैक्टर रहइबो पेरेंटल एटीट्यूड. छुआटे जन्म होले पेरेंटल एटीट्यूड रहितो माने गोटे गोटे से कोपाडी देउ वर्षा आउ तो फिल्म देखि न ए त ने ड्रम भीतर पके देबे ते आउ ने त ने पाइबो से कोन बडा की मां मां को दियो तो देखि न फिल्म का से जो मूवी टाइप रखियो माने छुआ को ने कोपाडी देबे. ओके आउ एक्सचेंज कर देबे छुआ को माने से गोटे मां पाखर जन्म होइतिबो तर मालिकर छुआ नथिबो त पानी के देई देबे. तो ये सब मूवी गुडा सब आगु आसी बेबी एक्सचेंज आवरा था दान करियो
ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଜଣେ କାମ କରୁଥିବ ସେ ତାର ପିଲା ହଉନଥିବ ଇଏ ତା ଝିଅ ଦେଇକି ଡାନ୍ସ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ହେଇଯାଏ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ଦେଖାଯାଏ and immediate postnatal care ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର କେୟାର ନବା ବୁଝି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ଏସି ଲଗେଇଦବା ସେ ବରଫ ହେଇକି ଆଇଥିବ ବୁଝିଲି କାରଣ ସେ ତ ଅଲରେଡି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ଯଦି ଏସି ଲଗେଇଦବ ସେ ପୁରା ଏକାଥରେ ବରଫ ହେଇଯିବ research study have clearly proved positive impact of the healthy prenatal environment contributing to easy adjustment of the postnatal life जदि छुआटी पेटर थिबा अवस्था रे जदि तार प्रॉपर केयर निया जाय postnatal period after birth तार एनवायरनमेंट से acquainted होबा को ताको किछि असुविधा हेइ न करे birth itself is considered to be hazardous experience more risks are associated with the instrument birth as well as the cesarean birth how instrumental birth रे बहुत प्रॉब्लम है instrumental जोड़ा को जे टेस्ट ट्यूब बेबी cesarean पेट काटी जो करा तो से समय बहुत डेंजरस सिचुएशन तक रही hence this experience associated with the birth is also major contributing factor of the infant adjustment in the postnatal period besides this the length of the gestation period where it is a premature or post-mature birth or a perfect normal birth is also another vital factor. जोटा कोजे gestation period टा कोन कोजे हमें केते मंथ कर जाऊ 9 मंथ धरा दे तो 9 मंथ माने 7 मंथ रे जदि जन्म होला कि मा 9 मंथ परे कृष्ण जन्म होला ताले से समय रे तभी consequence आसी ओके तो 9 मंथ नॉर्मली धरा जाय थाए 9 मंथ रु 10 12 दिन 15 दिन एपर सेपर हेई पारे कि ता पूर्वरु जदि छुआटी जन्म होतबो तले एटा प्रॉब्लम आसी किंतु को मंथ रे छुआटी जन्म होले बाहर एनवायरनमेंट से तो खा कोइ परियो को पढी दिलवा 7 मासे छुआटी को जदि 8 7 को देखो परफेक्ट कहू 7 मास रे जदि छुआटी जन्म होता है ताहले से बाहर एनवायरनमेंट से तो खाप कोइ परियो कारण तार जते के सब डेवलपमेंट होबा कथा 7 मास भीतर हे जाय एकटा किछि प्रॉब्लम होबनी जब टिके एक्स्ट्रा केयर नेले जेमते कि प्रीमैच्योर जते ताको आईसीयू भीतर किछि दिन रखा जाय के ताको पुणे रेडी कर in this context prenatal attitude towards the newborn infant more specifically that of the mother from the day of conception till birth is another crucial factor. The final and another important and powerful condition is the type of postnatal care of the newborn get during the period of infancy. जन्म हवा परे जो केयर टा सेटा नबाटा बहुत जरूरी कारण हमर जन्म हवा पर जो मृत्यु हारटा भारत रे पर्यंत अधिक अछि इंडिया रे सबटारो हाईएस्ट जदि डेथ केसेस होछि एटा होछि postnatal period रे एटा ही डेथ ता हेता है अप टू हमर 15 20 दिन भीतर छुआटी मरि जाय हां एटा हाईएस्ट होछि प्रॉपर केयर नि जति कि तू एसी रे बर्त खरा दिन छुआ जन्म होला एसी लगे दल छुआ बर पपा बुझी होछि ता पर रहछि एक्सपीरियंस माने जदी कोनोसी पेरेंट की नथिबे तो सेमानकर एक्सपीरियंस अछि छुआटा को केमते हैंडल करा जाय जदी पेरेंट की नथिबे आ सिंगल मदर तक जदी केयरिंग नथिबो तारे सेठी भी प्रॉब्लम मा एका समय निजो को आजला छुआ को हैंडल करिया मुश्किल है जदी सिजेरियन हेतिबो ताको भी कष्ट थिबो छुआटा भी कांदो थिबो तो से समय बड़ प्रॉब्लम है से समय आउ जने जे जदी खाए पाखरे मां किबा सासु ससुर ये सब ध्यान दे हां से सब जदी लेडीज की सब ध्यान ताको सब हैंडल करो सेटा जदी न हैंडल हेइ न पारे से समय भी डेथ चला से पे जो आफ्टर द बर्थ तो पाखा पाखे लोक किछि पासे माने रुहंती माने अप टू 21 पर्यंत कि 2 मास 3 मास का केयर नहीं जो माने एक्सपीरियंस है The most important during the stage of the development is the ability in the baby to know to respond different people. Okay, sorry. Good chapter. Baby unhu padibo.
The vital point here is that the infant is unable to speak. The parent and significant others should understand the feel and need of the infant. The more समय पे जदि भोक करिवो तमे कोन ए मा खाया दे हां तो छुआ जते बेले भोक करिवो कोन